the time you would have thought that America is powerful because it has a big economy and an army. This is actually a very basic reason, but the real question which should be there in your head is that how did America build a system where their economic, military, technological, financial, diplomatic power is so, enforcing? And why is America a superpower? That is what we are going to decode today in detail. Pick up your pen and your notebook. Remember this, that these videos are going to be a bit detailed, so that once you finish it, you know exactly everything about it. And इसको हम factually पढ़ेंगे. We will go in a form where you don't need to ratify everything or anything, in fact, and we will go quite logically. ठीक है? So सबसे पहले we will understand the definition. देखो, superpower is a country which is capable of projecting the power globally. चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो मिलिट्री हो, टेक्नोलॉजी वाइज हो, डिप्लोमेसी वाइज हो या पोलिटिकली हो. ठीक है? एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इज स्टिल रिगार्डेड एज वर्ल्ड्स लीडिंग सुपर पावर. इवन दो अभी चाइना का जो राइज है, इट इज हैपनिंग, बट स्टिल इट इज अ सुपर पावर. एंड लेट्स ब्रेक डाउन व्हाई. नंबर वन रीजन इज द स्केल ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी. ठीक है? This is the simplest starting point. I have my notes with you. आप अपने बनाओ please. And this is how you are going to build on a system where you will have notes for everything. Just write down the point and write down the keywords. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, how to make your notes specially for current affairs, that video is there which I have made in a very detailed way. उस वीडियो को देख लो बच्चों, and then start making your notes accordingly. Let's begin. As I mentioned, the number one point is scale of the American economy. देखो, ये एक बहुत ही simple starting point है. The economic size of America. The US has the world's largest economy with GDP around $30 trillion. Now, why does this matter strategically? Because देखो, economic size actually gives the country, they will have more funds for defense, they will have investment in technology, they will be able to maintain a good infrastructure, they will be able to support their allies, and जब economic shocks आएंगे तो वो उसको observe कर लेंगे आराम से. ठीक है? दूसरा, economic power जो है ना, वो आपको बहुत सारी other powers देती हैं. अब नंबर टू रीज़न समझते हैं, which is dollar. This is actually one of the America's biggest advantages. The US dollar has been dominant since World War II. ठीक है? And think about the significance. ठीक है? Countries, banks, companies around the world hold dollars and dollar denominated assets. So a huge amount of international trade and finance is conducted in dollars. उससे this gives America enormous financial influence, and it also makes sanctions much more powerful because access to dollar-based financial systems is something which matters globally. Number three is the Wall Street and the capital market. So America isn't powerful because it is producing things. It is also powerful because it is the global financial center. ठीक है? So New York hosts enormous capital markets. Companies around the world seek American capital. Investors buy US Treasury securities. American financial institutes जो हैं वो operate करते हैं globally, and so America's power has extended beyond कि America produce क्या करता है. And now the question is who controls the access to capital. और दोनों questions में ना बहुत बड़ा फ़र्क है बच्चों. Let's come to fourth point, which is geography. देखो, किसी भी country की जो geography है उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो. ओके, नाउ आई वॉन्ट यू टू लुक एट द मैप ऑफ US. एंड US के पास क्या क्या है? US हैज़ अटलांटिक ओशन एट द ईस्ट, पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट, कैनेडा ऑन द नॉर्थ एंड मैक्सिको टू द साउथ. सो बेसिकली अगर आप देखोगे, देर इज़ नो मिलिट्री पावर डायरेक्टली अक्रॉस इस बॉर्डर. ठीक है? तो उससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है. And at the same time, they have enormous agriculture land, fresh water बहुत है, energy sources हैं, navigable waterways हैं. So the two ocean geography also gives them a major strategic protection. ठीक है? American geography is something which is very very unusual. इनके पास security at home है and access to world है because of the water. So US strategic assets themselves identify geography and the resources, दोनों चीज़ें जो उनके पास हैं.
Number 5th is they are two ocean naval power. देखो geography becomes more important when it is combined with naval power. So America is simply not just protected by oceans. It has the ability to build and operate in these oceans. क्योंकि US की जो navy है, it allows America to protect करती है इनके sea lanes. It allows them to move forces globally. They support their allies. They maintain overseas military presence. ठीक है? And this is one of the fundamental differences between a regional power and a global power. A country may have a powerful army, but it can move and sustain that army thousands of the kilometers away. क्या वो कर सकते हैं? And America has been doing this since decades. मतलब नंबर 6 इज़ जो इनकी मिलिट्री पावर है, देखो उसको समझना ज़रूरी है. The United States is spending more on defense than any other country, but don't reduce American military power to just the size of the budget. The real advantage is actually the combination. किस किस चीज़ का टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक्स अच्छी है, इंटेलिजेंस अच्छा है, एयर पावर है, नेवल पावर है, स्पेस फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर, ग्लोबल बेसिस हैं. ठीक है, सो अमेरिका कैन कंडक्ट ऑपरेशन फार अवे फ्रॉम इट्स होमलैंड बिकॉज इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा बना रखा है. ठीक है, so America is actually possessing world's most powerful military technology भी है और nuclear capacity भी है, दोनों का combination है. Number 7th is the global military presence. ये बहुत ज़रूरी point है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझना. देखो America does not have to move its entire military from US अगर कोई crisis हो जाता है. क्यों? क्योंकि इन्होंने बना रखे हैं overseas bases. They have their forward deployed forces, they have their logistic networks, they have access agreements with countries, they have military partnership with countries. तो इससे इनको मिलती है एक strategic reach. मान लो कि यूरोप में एक क्राइसिस चल रहा है, अमेरिका कैन रिस्पॉन्ड. मान लो मिडल ईस्ट में कुछ करना है इनको, अमेरिका कैन रिस्पॉन्ड. इंडो पैसिफिक में कुछ हो रहा है, अमेरिका कैन रिस्पॉन्ड. क्यों? जापान में बैठी है, साउथ कोरिया में बैठी है. ठीक है, एंड दैट्स व्हाट मेक अमेरिका अ पावर ग्लोबल रादर देन अ रीजनल पावर. ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, विच इज़ अलायंसेज. सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड रीजन्स वाई अमेरिका इज पावरफुल. अमेरिका डज नॉट ऑपरेट अलोन. ठीक है, it has formal allies and strategic partners across Europe and South. America has formal allies and strategic partner across the Europe and the Indo-Pacific. Now I want you to think of NATO. ठीक है, I want you to think of Japan. I want you to think of South Korea, Australia, Philippines. So इन सारी countries में अमेरिका की presence है and many others through so many different forms of partnership. Now when we compare America's military power with another country, we should not simply just compare ऐसे America versus China. तुम्हें क्या क्या इसमें कंसिडर करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. देखो अब आप जब भी पावर को कंसिडर कर रहे हो तो यू हैव टू कंसिडर USA, देयर एलाइज, देयर बेसिस, देयर इंटेलिजेंस, देयर कोऑपरेशन, देयर ऑपरेट करने का तरीका. ठीक है, सो अमेरिकाज अलायंस नेटवर्क इज़ वन ऑफ इट्स मेजर स्ट्रैटेजिक एडवांटेज. ठीक है, आप सोच के देखो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास इतना ये सारे चीज़ों का मिक्स है. ओके, नंबर 9th इज टेक्नोलॉजिकल पावर. Now we have come to perhaps America's most important long-term advantage. ठीक है, you talk of Silicon Valley, Microsoft, Apple, Google, Amazon. I mean, name one country now. OpenAI. ठीक है, can you tell me name of one country which has so many giants in one ecosystem? ठीक है, Meta is also one of them. So क्या होता है, an enormous ecosystem of universities, venture capital, laboratories, technology companies. So American technology isn't merely a commercial advantage now. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उनकी साइबर सिक्योरिटी को, उनके सैटेलाइट्स को, उनके सेमीकंडक्टर्स को, उनके कम्युनिकेशन को. ठीक है, उनकी बायोटेक्नोलॉजी को, उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी को. So America's own strategic assessment identifies technological innovation as one of its core national power sources है, ये source of national power है basically. Okay, now point number 10 is the universities and human capital. देखो
You have to ask this question to yourself that why does America keeps producing technological companies, और कंट्रीज़ हैं बट इतना सारा तो कोई प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इट हैज़ एक्चुअली बिल्ट एन इको सिस्टम. ठीक है, देखो यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूसेस रिसर्च, रिसर्चर्स क्रिएट्स टेक्नोलॉजीज़, देन वेंचर कैपिटल फंड दीज कंपनीज, एंड कंपनीज फिर क्या करती हैं, इस पूरी टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज कर देती हैं. एंड फिर सक्सेसफुल कंपनीज दे अट्रैक्ट मोर टैलेंट और ज़्यादा इनोवेशन करता है. सो इफ़ यू सी दिस इज़ ऑल अ लूप पूरा ना, एंड दैट इज़ वाई अमेरिका हैज़ हिस्टोरिकली अट्रैक्टेड हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स फ्रॉम द होल वर्ल्ड. Okay, so American power isn't simply about natural resources, they have also built their human resources. And देखो बच्चों, आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि human resources क्यों important है. Now come on to point 11, okay, which is energy. देखो energy security matters big time to any nation and its national power. So the United States, they have significant oil, they have natural gas resources, and they have become one of the world's major energy producers. That reduces some of the vulnerabilities because आपको जब energy import नहीं करनी है, you are not dependent on someone, so it gives you a lot of flexibility. ठीक है, so that gives them a great flexibility in their foreign policy. So therefore energy is something which gives you economic power, it gives you strategic resilience, and it gives you geopolitical leverage. तभी उन्होंने ईरान पे अटैक करने से पहले वेनेजुएला के सारे ऑयल्स को अपने पास ले लिया था. ओके, पॉइंट नंबर 12 इज कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ओवर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. अब इसका क्या मतलब है, देखो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, अमेरिका डिड नॉट सिंपली बिकम अ मिलिट्री वाला पावरफुल नेशन. It helped build much of the international order after 1945. Now, think of United Nations, think of World Bank, think of IMF, ठीक है, think of so many institutions and their trade arrangements. So the United States actually emerged from World War II with a lot of economic and military strength, and they used that position to shape the post-war order. So they created something very important. इसको बोलते हैं institutional power. So power isn't the only ability when you force someone. It is the ability to help someone write the rules. ठीक है, and that's what they are doing with all these institutions. Okay. Now बात करते हैं point number 13 के about America, which is the soft power. ठीक है, hard power से अब soft power पे आते हैं. देखो, American influence isn't just about their tanks, their aircraft, their dollar. You have to think of their soft power as well. क्या क्या है? Hollywood, American music, their universities, their technology brands, their English, their culture, their social media, the American ideas and lifestyles. So millions of the people around the world consume so much of American cultural products every single day. उससे क्या होता है, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ फेमिलियरिटी एंड इन्फ्लुएंस दैट द मिलिट्री पावर इज नॉट एबल टू क्रिएट. ठीक है, नाउ sorry about that, you know, it's a long video, and that is why America's power is both hard and soft. दोनों powers को use करता है अमेरिका. ठीक है, now come to point number 14, which is the American market itself is a power. ठीक है, and this is something which you cannot miss because देखो अमेरिका के पास जो consumer market है ना, वो बहुत बड़ा है. If a company wants access to American consumer, it has a reason to maintain commercial relationships with US. क्यों? क्योंकि that gives Washington market power. ठीक है, so what happens is that US economic power is not simply through GDP, but through so many interconnected forms. They have a lot of productive power, they have market power, they have financial power, they have technological choke points, this is actually so much better when you want to understand कि अमेरिका की जो economic power है, it is beyond economy and so many other things which are actually interconnected. ठीक है, point number 15th is America's power is multiplied because the systems are kind of connected. अब इसका क्या मतलब है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करो. देखो, अमेरिका इज़न्ट अ सुपर पावर बिकॉज ऑफ वन थिंग, इट इज़ बिकॉज थिंग्स आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर. नाउ
I will tell you a chain. Try to make it, okay? Large economy. लार्ज इकॉनमी से इनको मिलते हैं फंड्स फॉर रिसर्च एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। अब जब इनको फंड्स मिलते हैं उससे क्या होता है, इनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, इनकी मिलिट्री इम्प्रूव हो गई। नेक्स्ट, उससे इनके इंटरेस्ट और जो एलाइज हैं, जो अलाइंसेज हैं, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे यूरोप को लगता है कि ये हमें सेव करेंगे जब हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एरो एरो करके इसे लिखते जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज़, उससे क्या होता है, ये लोग अपना रीच और ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे डॉलर से इनकी रीच कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे इन्हें मिलता है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस, ठीक है। सो दे गेट फाइनेंशियल मार्केट्स फ्रॉम दैट। नेक्स्ट, उससे इनको मिलता है ग्लोबल कैपिटल, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, इमिग्रेशन होता है, सारी स्किल्ड लेबर सारी दुनिया से आ रही है। उससे क्या होता है, दे आर एबल टू जनरेट मोर टैलेंट, ठीक है। इसीलिए दे हैव बिल्ड सो मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजी की कंपनीज। देन बिकॉज ऑफ ऑल दिस सर्कल दे आर एबल टू जनरेट दैट इकोनॉमिक पावर। ग्लोबल मार्केट में इन्होंने अपने आप को एक पावरफुल कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया है। उसके बाद बिकॉज ऑफ ऑल दिस वॉट दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग मोर इन्फ्लुएंस, एंड दैट मोर इन्फ्लुएंस इज समथिंग विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सॉफ्ट पावर। एंड at the end, whatever you are doing in this way, this is strengthening your global image in the world, पूरे वर्ल्ड के सामने, ठीक है। now this is the whole अमेरिका का पावर सिस्टम, ठीक है। अब बात करेंगे of an important aspect, that is point number 16, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था एंड वाई अमेरिका सडनली बिकेम सच अ सुपर पावर। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री नहीं समझोगे ना तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि हाउ दे हैव रीच्ड हियर, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड अमेरिका सुपर पावर स्टेटस यू हैव टू गो बैक टू हिस्ट्री। सो बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 America had enormous economic potential, but they had less involvement in the global security commitments. But World War II के बाद a lot of things changed. क्या change हो गया? देखो 1945 में जब World War II ख़त्म हुआ था, यूरोप वॉज ऑल डेवस्टेटेड, फिनिश्ड, ठीक है। जापान को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। जापान की अगर आप पावर पढ़ोगे ना इन वर्ल्ड वॉर 2, यू विल बी शॉक्ड, मतलब आपको लिटरली बहुत ही शॉकिंग लगेगा वो, ओके। सो क्या हुआ कि उस टाइम पे अमेरिका के पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी थी, न्यूक्लियर वेपन्स भी थे, एंड दे वर मेकिंग डॉलर सेंट्रल टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। सो अमेरिका एक्चुअली इमर्ज फ्रॉम वॉर एज अ very, I mean, they came out from a very strong position, and instead of simply returning to isolation, they actually started creating a whole international order, and uski wajah se they actually changed how the world today looks. Now the point number 17 is that the Cold War consolidated American power. क्यों? क्योंकि देखो दुनिया को ऐसा पता चल गया ना कि सोवियत यूनियन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि ये है। सो द कोल्ड वॉर एक्चुअली क्रिएटेड अ ग्लोबल कॉम्पिटिशन बिटवीन 2 सुपर पावर्स। अमेरिका बिल्ट नाटो, ठीक है, एंड दे हैड अलायंसेज इन एशिया ऑल्सो। इन्होंने ओवरसी बेसिस बनाना शुरू कर दिए, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए, इसके अलावा इन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम्स भी शुरू किए, ठीक है। सो बेसिकली दे बिल्ट अ ग्लोबल डिप्लोमेटिक नेटवर्क. When the Soviet Union collapsed in 1991, America actually emerged as world dominant global power. Now, this period is actually known as unipolar moment. क्यों? Unipolar moment का होता है जहाँ पे एक power जो है वो अपने आप को establish कर रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? Let's understand point number 18, where we will talk about how America's power is that power actually unlimited? Okay, to answer this question, understand this. This is where you will get the SSB question that are they somebody who cannot be defeated? देखो, America has been facing China, ठीक है? China is a major economic and technological military competitor, ठीक है? So now the question which comes, is America still a superpower? The answer can be yes, but I will give you another important aspect to is, see, America remains exceptionally powerful, but it has something which is quite unusual, and they have kind of developed their multiple dimensions, ठीक है। Now if you talk about China may challenge America economically and technology wise, और रशिया की अगर बात करो तो रशिया has strong military and nuclear capabilities, have economic skill,
they have dollar, they have military reach, they have alliances, they have technology, they have geography, they have soft power. Now they have kind of a good mixture of everything, and that is what makes them different. Now let's come to the aspect of that why India should care, and this is what is most important for your SSB, that India does not need to decide whether America is good or bad. एंड एक्चुअली अगर आप ये डिसाइड करने लग जाते हो तो ये बहुत ही इमेच्योर जियोपॉलिटिकल अप्रोच होगी. इनफैक्ट द क्वेश्चन वी शुड बी आस्किंग आवरसेल्फ इज what serves India's national interest. So देखो, America matters to India because of the Indo-Pacific security, because of China, because of the defense technology, because of the trade and investment, because of space, the intelligence cooperation, the energy, and all the global institutions. But India is a country which values strategic autonomy, and if you don't understand what exactly is strategic autonomy for India, please watch that video. There is a detailed video on strategic autonomy. So India's good relationship with America is best understood as a partnership without a permanent alignment. Okay, so we cooperate with the US wherever our interests are important, while we are maintaining independent relations with Russia also, Europe also, Iran, all the West Asian countries. So this is the kind of attitude India is following, and this is what you should know for your SSB. ठीक है, अभी मान लो आपसे SSB में पूछा जाए कि the interviewer asks you that why is America a superpower. अभी देखो, it is not humanly possible कि जो मैंने 19 points बताए हैं you will be able to tell those 19 points, but what I want you to remember is 6 P's. Okay, what is that P? Power of economy, power of dollar, power of military, power of technology, power of alliance, and power of geography and soft power. ठीक है, and then you can build your answer like this. What makes US exceptional is not any one single source of power, but the way its economic, military, technology, financial, geographical, diplomatic advantages reinforce each other and allow it to project its power globally. Okay, now let's do a quick revision of what we have studied. So it's the largest economy, it has the dollar dominance, it has the military and the global reach, it has technology, talent and universities, they have alliances, geography, institutions and soft power. Okay, now you multiply all of this, and that is what is affecting the American influence in the whole world. And let's finish off with the crux of the class, that America isn't a superpower because it is strongest in one category. It is a superpower because it is exceptionally strong across many categories at the same time, and that is the strength जो इसको बनाती है superpower. And this was a requested video by one of the viewers, that America superpower क्यों है, बाकी countries. ठीक है, so hope this video helps you, and I will be putting more geopolitical videos, more SSB videos, and more heart to heart talk videos in OTA series as well. So I have removed the newspaper analysis totally from my YouTube page, so that, and I have shifted it to WhatsApp channel which I have made. The link is in my post which I have posted this morning today. Please find that link, join the channel, and I will be posting important pictures of all the articles which comes there, because बहुत बच्चों के मेल आ रहे थे कि उनके वहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं आता है. So देखो, रोज़ कम्युनिटी एक आर्टिकल पॉसिबल नहीं है. That's why I have made that group, so that I can post everything there, and we can have better analysis of whatever topics you need me to cover. I will see you in the next one. Till then, bye bye.